हेलो एंड वेलकम। मैं स्वागत करती हूँ आपका आरसीआई के नवशिखर चैनल पे। आज का जो हमारा सेशन है ये बेस्ड है हाउ टू टीच सोशल स्टडीज़ टू हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल, एंड फॉर द पर्पस वी हैव टुडे इन आवर स्टूडियोज मिसेस लता नायक, who's MD in Special Education, hearing impaired, from Smith University, USA. Besides that, she's been working in this field since last 25 years. Right now, she's the principal of Sanskar Dham Vidyalaya for hearing impaired in Mumbai. And one thing also that she has been awarded Rashtriya Puraskar in 2007. We welcome you, ma'am, for today's session. Hello. Besides Srimati Lata Nayak, we have small Anil and Rahul in our studios as well. So as you know that today's topic is how to teach social studies to hearing impaired people. Before that, ma'am, we would like to discuss, मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दूं कि पहले भी हमारा ये सेशन मैम के साथ हो चुका है, in which we discussed how much vocabulary is important for teaching any subject to hearing impaired people. So मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सोशल स्टडीज़ ये सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सिखाने के पहले डेफ बच्चों की वोकैबुलरी बिल्डिंग होनी चाहिए, और उसके लिए हमें उनके अलग अलग मेथड जो है जो हम लोग फॉलो करते हैं डेफ स्कूल में, उसके ऊपर ध्यान देना है। सिंपल है कि जैसे कि कॉन्वर्सेशन जो हम लोग हमेशा लेते हैं फर्स्ट क्लास स्टार्टिंग करने के प्री स्कूल में, कि कॉन्वर्सेशन बच्चा अपना अपना कॉन्वर्सेशन लाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है क्लास में। उसी प्रकार आज हम उसी को लेके हम आपको बताना चाहते हैं कि आज राहुल आपके सामने जो प्री स्कूलर है वो कैसे किस प्रकार इसका दर्शन करेगा। एक तो पहला एक कॉन्वर्सेशन ऐसा हुआ था क्लास में कि किसी बच्ची ने जू में जाके वहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि मैंने हाथी देखा। अभी उस बच्चे ने कहा हाथी देखा, दूसरे बच्चे ने कहा और कोई एनिमल्स थे क्या। तो उसके ऊपर डिस्कशन होते होते ये डिस्कशन इतनी अच्छी तरह से हुआ कि बच्चे लोगों ने अपने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया। उसके बाद में दूसरे दिन हमने उसके ऊपर पैसेज बनाया था कि कई बच्चे जू में गए थे और वहाँ उन्होंने यस, और देन वी स्ट्रेस्ड ऑन द वर्ड एलिफेंट। हाथी पे हमने ज़रा जोर दिया क्योंकि हमने सोचा कि चलो हाथी के बारे में सीखे, क्योंकि काफ़ी अलग सा एनिमल है और बड़ा है, तो हमने वैसा सोचा। उसी दरमियान न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया था, किसी हाथी करीबन वो 51 साल का था और उसकी मौत केरला में हुई थी। तो उसी के ऊपर हमने एक जो पैसेज बनाया था न्यूज़पेपर न्यूज़, वो पैसेज इस प्रकार है कि नानू द एलिफेंट died in Kerala. He was 51 years old. अभी ये पैसेज लिखने के बाद न्यूज़पेपर का हमने उसके ऊपर बच्चों के साथ डिस्कशन किया। अभी हम यही पैसेज अनिल के राहुल के साथ हम डिस्कस करेंगे। राहुल, कैन यू जस्ट रीड दिस? हु इज दिस? नानू, या नानू, रीड। नानू old. You remember? Who is this? Elephant. Yeah. What happened to him? He died. Where? Which place did he die? Which place? See? What is this? See? Map. अभी उसी तरह हम लोग ने ऐसे शब्द लिखे थे जैसे कि मुंबई और केरला, मुंबई और केरला। Now the child has to read these words and then place it on the map. Okay? Now you stay in which place do you stay? Which place do you stay? Your place. Correct. And this is who? Whose place is this? Elephant. What happened to the elephant? Died. Where? Okay. अभी देखो बच्चे को इतना याद है कि बम्बई ऊपर है, केरला नीचे है,
ऐसा नहीं कि बच्चे ने बम्बई इधर नीचे लगाया और केरला इधर लगाया। सी सो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ करते वक्त कि बच्चे जब हम सिखाते हैं, कॉन्वर्सेशन हो या पैसेज हो, और जब सिखाते हम सब दिखाते हैं बच्चों को कि दूसरे टाइम अगर जब वो पूछा जाता है तो बच्चों को आना चाहिए। तो अभी ये बिगिनिंग हुआ बच्चों की ज्योग्राफी सीखने की। तो राइट नाउ वी जस्ट स्टार्टेड विद राहुल। तो आपको क्या लगता है मैम, व्हाट इज द एग्जैक्ट एज एट विच यू नो वी शुड start teaching child social studies? Yeah. Is there a specific age or criteria or what? Not age criteria. I think it should begin right from preschool. Because as like discussed last time, that the basic vocabulary required is like about food, about clothes and everything. And I think all those vocabulary words are covered in your preschool. Like your food items when you talk, your rice, wheat, everything that you eat comes. Discuss simple fruits, which was discussed last year. So the places where it is grown, the children also learn. So what are the requirements of it, the soil and everything. As they grow, they know what it is. See, now he knows the place, Kerala उसको पता है. आगे बढ़कर जब भी वो हम नक्शा के बारे में बात करते हैं तब तक उसको मालूम है कि ये एक स्टेट है अपना. So later on when he comes to next stage, he get to know more about Kerala. Yes, that is what happens. इसी प्रकार हम अगर बच्चों को जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, अभी हम सोचो कि गांधी जयंती है तो गांधी जी का फोटो दिखाए, बच्चों के गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत बताओ प्री स्कूल में भी. कल छुट्टी है, क्यों छुट्टी है वो बताना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि छुट्टी है, चलो कल छुट्टी है, कल स्कूल नहीं आना है. पर उसके पहले हम बच्चों को बताए कि क्यों छुट्टी दी गई है और उसके बारे में बताओ. या अगर समझो कि शिवाजी जयंती है, 19 फरवरी को बम्बई में छुट्टी मनाई जाती है. अगर 19 फरवरी छुट्टी है तो क्यों छुट्टी दी गई है, ये हम सिर्फ 2 या 3 वाक्य में बच्चों को बताएं कि यस 19 फरवरी शिव जयंती है, यहाँ शिवाजी का, और शिवाजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बच्चों को दे तो बहुत अच्छा है. तो हमारा इतिहास की भी शुरुआत होती है. तो ऐसा कोई ये डेडलाइन नहीं है कि बच्चों को इसी उम्र में हम सिखाए सोशल स्टडीज लिखाना शुरू करें, ऐसा जरूरत नहीं है. ओके, तो जैसे कि मैम ने अभी बताया कि कोई ऐसी एज लिमिट या स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया नहीं है कि हमें बच्चों को इस एज से जो है सोशल स्टडीज़ या कोई भी सब्जेक्ट सिखाना शुरू करना है. इस पे मैम ने एक बहुत ही अच्छा हमें एग्जाम्पल दिया कि अगर बच्चे की छुट्टी है गांधी जयंती की, तो सिर्फ उसे ये बताना काफ़ी नहीं होगा कि कल आपके स्कूल की छुट्टी क्यों है, बल्कि ये बताना भी ज़रूरी होगा कि छुट्टी गांधी जयंती की वजह से है और कुछ 2-4 लाइनें जो आप गांधी जी के बारे में बताना चाहते हैं. सो दैट्स आई थिंक नॉट ऑल अबाउट जनरल नॉलेज, बल्कि ये हिस्ट्री की शुरुआत भी हो सकती है. यस, एब्सोल्युटली. ओके, सो नेक्स्ट मैम फिर आप क्या कहना चाहेंगी? यही कि अभी इसका हुआ एक उदाहरण ज्योग्राफी का हो गया, अभी हिस्ट्री का बताया जैसे कि फेस्टिवल्स के द्वारा कर सकते हैं. उसी प्रकार जब हमारे दिन शुरुआत होती है प्री स्कूल में कि वेदर क्लाइमेट कि दिन कैसा है, जब शुरुआत होती है स्कूल की तब बम्बई में बरसात होती है. सो लाइक हाउ इज द वेदर टुडे, इट्स अ रेनी वेदर. तो बच्चों को मालूम पड़ता कि आज बारिश का दिन है, तो उसके बारे में बात करो. फिर एक छोटा सा चित्र बनाओ, जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं कि छोटा सा एक पिक्चर बता के भी बच्चों को काफी हो जाता है. कि जैसे कि टुडे इज अ रेनी डे, यहाँ पे हमने बताया है कि इट्स अ रेनी डे. बच्चों को ये पता चला कि इट्स अ रेनी डे, तो वो बोर्ड पे आपके लगा दो तो बच्चों को सीख गए कि ये कि क्लाइमेट की शुरुआत इसी में भी हो जाती है. ओके, अ विंडी डे उसके बारे में हो जाता है. तो ऐसे इसी तरह से हमारी प्री स्कूल से शुरुआत पूरी तरह से हो जाती है. ओके, एंड देन इन द सेम वे वी कुड टॉक अबाउट डिफरेंट सीजंस एज वेल. कौन सा गर्मी चल रही है, सर्दियां चल रही हैं, रेनी सीजन चल रहा है. यस यस, ऑल लाइक दैट डिफरेंट. जैसा दिन आता है वैसे कि कभी कभी अचानक बरसात बंद होता है और गर्मी शुरू होती है, तभी हम ये पिक्चर नहीं दिखा सकते. तब हम बता देंगे आज टुडे इट्स अ सनी डे,
तो तुरंत एक सूरज का चित्र लगा के कि हाउ इज द डे, इट्स वेरी वेरी हॉट। बच्चे अपने आप को बताना शुरू करते हैं कि आज का दिन कैसा है। और देखते देखते ये भी नहीं पता चलता कि जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं या सेकंड स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं, बच्चों को काफी पता चल जाता है कि आज का क्लाइमेट कैसा है, क्या है वो। तो मैम व्हाट डू यू थिंक, जब बच्चा प्री स्कूल लेवल पे है तो आप एज अ टीचिंग एड क्या पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ जो है रीडिंग वो यूज़ करेंगे या फिर यू यूज़ साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग विद डेफ पीपल? नो सी, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। अगर बच्चे को अच्छी तरह से हियरिंग है, बच्चा कर पाता है, तो ओरल लैंग्वेज से और ऑडिट्रेशन से हो सकता है। पर कई बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमको तो ज़रूरी है कि थोड़ा साइंस करके उनके साथ करना बहुत ज़रूरी है कि थोड़े साइंस यूज़ करो और देखो कि वो बच्चा कितना मतलब सीख पाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा वो ब्लैंकली बैठो अपने क्लास में और कुछ नहीं कर पाओ। दैट इज़ वेरी वेरी बैड। कि 8 बच्चे हैं और 8 बच्चे में से 3 जन को बहुत अच्छी तरह से सुनने आता है, हम कर रहे हैं, उनका सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि 8 में से 3 बच्चों को सिर्फ आया, बाकी के बच्चों को कुछ नहीं आया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। सो एज पर द चाइल्ड्स हियरिंग एंड हिज एबिलिटी, द टीचर हैज टू पे अटेंशन टू इट। Very very important. So it means that child basically needs individual attention, no? Because हर बच्चे का level, हर बच्चे की जो needs हैं, they're completely different from each other. Yeah. हर एक की needs तो अलग होती ही है, पर ये भी जानना जरूरी है कि हम जब क्लास लेते हैं, हम 3 या 2 बच्चों को इंडिविजुअली नहीं सिखा रहे हैं, हम पूरे क्लास को सिखा रहे हैं। तो वो लेसन हम हमारे पूरे क्लास के लिए किस तरह होना चाहिए, वो टीचर की जरूरत है। और इसलिए मेरे को ये बताना बहुत जरूरी लगता है कि हर टीचर ने रेफरेंस बुक रेफर करना। जब जैसे कि हमने आज अभी सब यहाँ काफी बुक्स रखे हैं रेफरेंस के लिए। देखो कि टीचर जब कोई पार्ट पढ़ाती है तो उसके लिए शी हैज टू रेफर टू सेवरल बुक्स। ऐसा नहीं कि हम एसएससी लेवल पढ़ा रहे हैं तो हम एसएससी के ही बुक्स को लेके ही चैप्टर कंप्लीट करो, नहीं। उसके लिए अगर सीबीएसई के बुक्स है, कहीं कहीं अच्छे अच्छे बुक्स मिलते हैं, या फिर आईसीएसई के बुक्स रहते हैं जहाँ के वेरी गुड पिक्चर्स रहते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ और आपको लगता होगा किसी टीचर को कि अपना लाइफ एक्सपीरियंस दे दो बच्चों को, तो वेल एंड गुड, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड इन द सेंस दैट कि बच्चों को इतना ध्यान में रहेगा कि वो उसका एप्लीकेशन अगले इसमें भी हो सकता है। ओके तो यहाँ पे हमें मैम ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपके स्कूल में चाहे सीबीएसई का पैटर्न फॉलो हो रहा हो या एसएससी का पैटर्न फॉलो हो रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को उन्हीं किताबों में से स्टिमुलेशन दी जाए या उन्हीं किताबों को दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाए। कहीं भी किसी भी मोड से या किसी भी मीन से अगर आपको अच्छी पिक्चर्स मिल जाती हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि आप बच्चों को दे सकते हैं, देन इट शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम आई थिंक एनी बुक और एनी अदर मीन्स फ्रॉम दैट। अभी हम इनको एक एग्जांपल बता सकते हैं इन लोगों को कि एक बच्चा है, अभी बड़ा हुआ है काफ़ी, वी कैन शो हिम सम पिक्चर्स ऑफ फेस्टिवल्स और उसके द्वारा उसको कितना ज्ञान है अलग अलग इसके बारे में, वी कैन जस्ट शो। ओके ओके अभी हम आपके सामने थोड़े चित्र दिखाते हैं। देखो ये है एक नवरात्रि का चित्र। नवरात्रि एक जो फेस्टिवल है जो सबको मालूम है। दिस इज द नवरात्रि फेस्टिवल। नाउ लेट्स शो दिस टू अनिल एंड सी। अनिल, can you just tell me what is this picture about? Navratri. Navratri. Who celebrates this festival? Where do you see this festival? Navratri. Where is the festival celebrated? Where? Which place it is celebrated? Oh, All places. Where? In America, London, where? India. In India. That's what I want. It's celebrated in India. Do you participate in the game? Yes. You like to play? Yes. Okay. Now, what is this picture? Now, ये है picture, देखो ये होली का है, ये एक होली का चित्र है. Okay. What is this picture about? The festival of color. Color, festival of colors. Do you play with this? Yes. Mukund, do you also play? Holi. Holi, yes. Do you like this festival? You like it? Is it nice? Yes. Yeah. And this is, see, what are all these? What is this all? Powder. What powder?
Arti. colors. Yeah. ये है हमारा दिवाली का चित्र है. ओके, व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट? Diwali. Diwali. Who celebrates Diwali? Who? Baby. Yes. Baby. Yes. Which people? Which people celebrate it? Only. Rangoli. They draw Rangoli. But who celebrates this festival? India. In India, this celebration. What is this picture about? To pray. To which goddess do you pray? The bear. Lakshmi. You pray to Lord Goddess Lakshmi. Yeah. And what is this Rangoli. Rangoli? Now, do you put Rangoli every day in your house? You put Diwali. only On in Diwali. Diwali. Yes. तो ये था हमारे बच्चों के कि फेस्टिवल के बारे में जानकारी होती है. और उसी प्रकार आज हम इसको एक पिक्चर दिखाएंगे. ये है इतिहास का शिवाजी का चित्र है. यहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में. अगर ये सिर्फ एक चित्र दिखा के बच्चा क्या बता सकता है हमें. Now tell me, Mukund, what is this? Shivaji. Now, do you know anything about Shivaji? Who was his mummy? Who was Shivaji's mummy? Jitamai. Jizabai. Jizabai was his mother. And who was his father? Tati. Shahaji was his father. And his teacher, do you know who was his teacher? Tata. Dadaji. Tata. Dadaji. Tata. Dadaji Nanati. Kondev. Right. What did his teacher teach him? His teacher taught him, no? Like how I teach you. What did Shivaji's teacher teach him? Freedom. Peace. Huh. Freedom. What did she teach him? The Yes, he taught him sword fighting. What else? What else do you know? You remember? What else did he teach? Can you remember something? That is there. One. Second. Horse riding. Horse riding. Isn't that he learned horse riding? Then he went on horse and he started fighting. तो ये हुआ हिस्ट्री का. Now for civics, like what we was like, ये हमारा फ्लैग है. इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अभी. What is this? Whose flag is this? No, whose flag? Which country flag is this? India. Which country? Which country flag? Where? Of which country? T. Which country? Can you help him? India. It's a flag. Your country, which country? You don't know? It is? Which country? India. It's the country India. Now, how many colors are there? How many colors are there? 3 colors. Which color is this? Okay. White. Now see, अभी इधर ही difference देखो. अभी ये second standard का बच्चा है तो वो बोलता है orange, whereas the little older child uses the word saffron. So ये जो difference है is very important. Yeah, right. See that as he grows, he has to learn to use the different color. तो ये हुआ Saffron. White. white and Green. green. Now see, there are all these 3 colors. Each color teaches you something, right? Now you can tell me, what is this saffron color for? Bravery. Oh yes, bravery. You remember we did a lesson on bravery? See, children are given bravery awards. Yeah. You remember? You remember any name of a child who got bravery award? Henna Bakshi and Hen Backlong, right? He had got a, which year did he get a prize? 2000. Very good. Okay. Now what does the white tell us about? Peace. Peace. What is peace? White. Quiet. No freedom. No Fight. fighting. No fighting. No fighting. Very good. Yes. And what is this green color tells us?
Prosperity. What is prosperity? I don't know. Protest. Make progress. So our country must make progress. Yes. Right. So this is how like they have learned through each of the standards that they have come up through. ओके तो हमने अभी देखा कि एक ही कॉन्सेप्ट एट वन टाइम आपने किस तरीके से 3 लेवल्स में सिखाया. लाइक अगर हमने यहाँ पे फ्लैग की बात की है तो एट द प्री प्राइमरी स्टेज हम ये बता सकते हैं कि दिस इज अ फ्लैग. Correct. देन एट द प्राइमरी स्टेज जहाँ पे अभी मुकुंद है वी Three कुड colours. जस्ट टेल हिम दैट देयर आर 3 कलर्स इन द फ्लैग. वाइल एट द सेकेंडरी लेवल या फिर जब हम हायर लेवल्स की बात करते हैं तो बच्चे को पता है कि विच कलर स्टैंड फॉर विच पर्पस. Correct. तो मीन्स कि हम एक ही कॉन्सेप्ट को कितने कितने तरीके से और हर लेवल के बच्चे को सिखा सकते हैं. और एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखो हमारे अगर बुक्स हम देखेंगे, कोई भी बुक्स ले लो, वो गोज अप इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडेशन ही होता है. राइट. ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुछ भी आ जाता है हमारे पास. तो इसीलिए टीचर को बहुत ध्यान से ये करना है कि वोकैबुलरी है जो अपर क्लास की भी लेके उनके द्वारा उनकी बढ़ानी चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू थिंक कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के व्हाट रोल डू दे प्ले इन बिल्डिंग द वोकैबुलरी? Now here there will be many discussions. See, we cannot even blame the parents because today's time you see that parents are both working. राइट. Most of the parents are dependent on tuition teachers. The tuition teachers, what she does is only makes them learn the question and answers or the fill in the blanks or the true or false that is given to the child in school. But parents can at least do one little thing is they can take these children out for visits. And through visits make them experience. और जब बच्चे ये experience लेंगे खुद में सीखेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे और ध्यान में रखेंगे. नहीं तो क्या होता है उस क्लास के लिए पढ़ते हैं बाद में भूल जाते हैं वो क्या है. वैसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए इट्स वेरी वेरी एटलीस्ट पेरेंट्स कैन टेक देयर चिल्ड्रन आउट फॉर आउटिंग्स ऑन अ संडे. कुछ नहीं तो अभी हमारे पास भी जो आज बच्चे आए हैं इनमें से 2 पेरेंट्स जैसे राहुल और अनिल के पेरेंट्स हैं. One is a mason, father is a mason and mother is a maid servant, whereas his father is a plumber. तो it's very sad the language उनके घर में जो भाषा बोली जाती है वो अलग है और बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं. पर बच्चे काफी होशियार है तो उनके ऊपर थोड़ा टीचर को ही ध्यान देना पड़ता है. अभी ऐसा ध्यान देना नहीं है कि बच्चों को खाली टेक्स्ट बुक आना जरूरी है. आज बच्चे हमारे दिल्ली पहुंचे हैं बम्बई से तो रास्ते में हम लोग ने मैंने उनको सिर्फ एक मैप एटलस दिखाया और उनमें से बताया कि हम लोग बम्बई से लेकर दिल्ली हमारी ट्रेन किस तरह दिखाई और उनको वो रेलवे ट्रैक की साइन दिखाई और बताया कि ऑन द मैप इट इज रिप्रेजेंटेड दिस वे द साइन और उनको बताया कि हमारी ट्रेन आज बम्बई से किस तरह गई और उन्होंने तुरंत उनको याद आया कि अरे हम कितने स्टेट से जा रहे हैं. तो अभी उसका एक उदाहरण हम पूछेंगे. अब अनिल से पूछेंगे वो बता सकते हैं. अनिल, वी केम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली. डू यू रिमेंबर which are the states that we came passed through? Yes, please tell me. Mumbai, Mumbai is in which state? Maharashtra, Okay, then Gujarat, Gujarat. Can you remember any place name I showed you? Surat, Surat. Yes, we came across Surat and then I told you that that was Gujarat. After that we came to Rajasthan, Rajasthan and then from Rajasthan we went to, Rajasthan, I told you a little part of which place, Andhra, which Pradesh it was. Uttar Uttar Pradesh, Correct, yes, it was Uttar Pradesh. That station name, do you remember the name of the station? It begins with an M. It begins with an M. Putla, Mathura, right. So we came near there and then we entered Delhi. So देखो अभी बच्चों को आते आते इतना सीखने को मिला कि हमारे 4 स्टेटों से ये ट्रेन आई है और हम दिल्ली पहुंचे हैं. तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है आई थिंक कि बच्चों की जो नॉलेज है वो मुझे लगता है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड देम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एज वेल. Absolutely. और इन केस जैसे कि आजकल हमें पता ही है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू नो बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग. इसलिए कम से कम एक छुट्टी भी अगर आपको मिलती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम या फिर अगर हम उनको विजिट्स के लिए लेके जा सकते हैं तो Absolutely.
और सिंपल एग्जाम्पल मैं तुमको आपको एक देती हूँ. आप घर में खाना बनाते हैं, जो चीज़ें लाते हैं, करीब वो एक और एक नक्शा बन रखो अपने घर में, क्योंकि ज़्यादा तौर पे प्राइमरी लेवल में ज़्यादा तौर पे अपने अपने स्टेट का ही सिखाया जाता है, या फिर बच्चों को अपने भारत के बारे में सिखाओ. उसी जो खाना, चावल, अब ये चावल कहाँ ज़्यादा उगता है, गेहूं कहाँ उगता है, इतने बारे में, या फ्रूट्स खाते हैं तो ये फ्रूट्स कहाँ से आए, राइट, कहाँ उगते हैं, इतने बारे में भी जानकारी दो. तो जब बच्चे की थोड़ी रुचि बढ़ती है कि सोशल स्टडीज, अक्सर देखा जाता है कि सोशल स्टडीज बोलो तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, या फिर इट इज अ लॉट ऑफ स्टडीज, वी डोंट वांट. पर अगर पहले से बच्चों में ये इंटरेस्ट डेवलप की जाए और उनको ही उसका पार्ट बनाए, तो आई थिंक द चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट. एंड आई हैव सीन दैट चिल्ड्रन हु यूज्ड टू हेट द सब्जेक्ट, आज हमारे जो बच्चे 10वीं में भी गए हैं, इट वॉज रियली बहुत अच्छा लगा कि इतिहास में उसको सबसे ज्यादा गुण मिले. सिंपल, अभी 10वीं का वो लेसन था हमारा रेवोल्यूशन पे, तो हमने बोला आप रेवोल्यूशन कैसा करते हो घर पे मम्मी के साथ, वो भी एक रेवोल्यूशन ही है कि हम ये नहीं करेंगे वो करेंगे, तो वो शब्द इस्तेमाल कीजिए, रिवॉल्यूशन, उसके हिसाब से ही ये जो रेवोल्यूशन होते हैं उसमें उनको सिर्फ फर्क दिखाओ. तो आई थिंक चिल्ड्रन डू वेरी वेल. ओके. एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे को कई तरह की नॉलेज मिल रही है, जैसे कि Yes. आपने फ्रूट्स का एग्जांपल लिया. तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, Yes. तो ना कि हम बच्चों को सिर्फ बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर मैप पे क्या कहाँ है, बल्कि हम उन्हें ये भी बता सकते हैं कि जो एप्पल की प्रोडक्शन है वो वहाँ पे काफी ज्यादा उस पर होती वेरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम इन बच्चों को भी इनके बारे में बता सकते हैं. अभी ट्रेन से आते वक्त अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट ब्रिंग इट ओवर, दे लेफ्ट इट इन द बैग. उन्होंने बैठे बैठे कितने सुंदर फ्लैग्स बनाए हर एक कंट्री के. आई सेड व्हाई यू मेकिंग, नाउ IPL मैच इज गोइंग ऑन, क्रिकेट, so every country has a Has got different its match own, और different country has a different flag. तो उस तरह उन्होंने बैठे बैठे फ्लैग खेले और बस खेलते रहे कि come on I will hide now which flag which do I pick up. So automatically they started remembering the different countries. And there just I introduced to them, okay, this country, now I want to go to this country, how will I travel, what mode of transport will I use. So you have to use your geographical terms at times like this, you know, or historical term. And basically like if a teacher at the preschool level की teacher अगर वो अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड के सारे किताबें एक बार पढ़ ले बिफोर द सेशन और उनकी पूरी वोकैबुलरी अपने पास रखो, so she knows what are her words, where she has to concentrate, based on that what visit she can make. Full planning होनी बहुत जरूरी है. Right. So the key word here is basically the planning. कि you know before special educator खुद पढ़ाने जाए, she should be herself very prepared कि मुझे क्लास में exactly क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना. एक मुझे ये बताना है कि even if though I have an experience of 25 years, many a times I just do not go and sit in the class. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि प्लानिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे पहली क्लास में पढ़ाना है तो वही अगर पार्ट मुझे लोअर सेक्शन में कैसे डिवाइड करना है वो ज़रूरी है कि अगर ऊपर के वाले क्लास को पढ़ाना है तो उसको मुझे क्या करना है ये देखना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हमारे आज वो मेथड्स हैं, आई थिंक यू कैन शो देम. या मैं यही बात पूछना चाह रही थी कि आर देयर एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ टीचिंग मेथड्स दैट वी यूज? देयर आर दीस स्पेशल मेथड्स. See, this is like the common methods, whether it is for handicap or whether it is for हमारे normal children. देखो यहाँ टेक्स्ट बुक मेथड है, उसके बाद में स्टोरी टेलिंग मेथड है, बायोग्राफिकल मेथड है, लेक्चर मेथड है, कॉन्वर्सेशनल मेथड है, द क्वेश्चन आंसर टाइप, which is the same kind which we deaf people use through conversation, how our deaf child learns to speak. Okay, now where the conversation, the vocabulary is built up, along with it other subjects also you can do. Then note dictation, which is very difficult for our deaf children. Assignment method, the supervised method, the discussion method, then you have the project method, the source method, and the unit method. Then I have put the observation method. But of all these methods, I would tell you, experience is the best one. You give them a little experience of what you are doing in history, geography, civics. Like even for simple election, move out the children, see the different parties,
hold a similar kind of parties in your school. Make someone the leader of BJP, make someone the leader Yeah, of you Congress. can, set up that simulated setup Absolutely. as well. And like, or simple, like you have houses, different houses in your own school. Have a nice election. Let the children put the marks on them that yes, he has been elected. Everything, and they'll learn it so much. So when the mother or father has done the voting and come back, they come and tell you. I remember one child came and told me, "Ki ma'am, my parents did not vote." I said, "Why? You should tell them to go." I told them. So then my mummy went in the evening. So the right of a citizen, उस बच्चे को मालूम पड़ा. तो अपनी मम्मी जो illiterate थी, पर उसने उसको जाना ही किया कि तुमको जाना है मम्मा. और अपने मम्मी के साथ गया, फिर वहाँ देखा वो वैसे वोटिंग किया जाता है. ओके तो मतलब कि यहाँ पे जो बच्चा था, he was not only aware of the rights of a citizen himself, Yes. but he even persuaded his parents to go and vote. Absolutely. Okay. So are there any teaching aids also, ma'am, Yes, that yes. we could use with them specifically? टीचिंग एड्स तो काफी है. आप जो खुद टीचर बनाएगी बेस्ड ऑन योर लेसन्स, दैट इज द बेस्ट आई वुड से. Naturally you can immediately make it, and that is why I, before going to what teaching aids we have, मैं एक बताना चाहती हूँ. एज अ गुड टीचर आई थिंक हर एक टीचर के पास अपना खुद का किट होना जरूरी है. एक तो एक छोटा सा ग्लोब, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्लोब है. एक ग्लोब होना जरूरी है. एक सिजर, मार्कर, पेन्स, फिर तुम्हारी ये कलर पेन, स्केच पेन्स, crayons, simple stencils of say your Mumbai, India or the world map. काफी, because as you come across, बता नहीं सकते, हम conversation में भी आ सकते हैं, हम newspaper न्यूज लेते वक्त भी आ सकता है. तो सब handy आपके पास रखो, तो you can immediately start using it and writing it. Okay? अभी उसके बाद ये तो है मेथड, टीचिंग एड्स हम जो यूज कर सकते हैं. अभी यहाँ पे टीचिंग एड्स जो है, देयर आर 4 बेसिक डिफरेंट. वन इज द प्रिंटेड, जो हम अपने टेक्स्ट बुक है वो. दूसरे है विजुअल एड्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, एंड सी यू कैन सी पिक्टोरियल. देन यू हैव द ऑडियो विजुअल एड्स in the form of tape recorders. These are very less used for all deaf children. They can be used mostly for children who have good hearing and who have good audition over there. Right. So then you have the audio visual aids. Through pictures you can show them, and chalkboards and excursions. I have written, see, field trips. All these are also equally important. Okay. So specifically if we come over to civics, ma'am, हाँ. अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो we could show the pictures of the leader. Yeah. या ज्योग्राफी की बात करते हैं तो जैसा आपने बताया हम मैप शो कर सकते हैं, Correct. ग्लोब शो कर सकते हैं. लेकिन अगर हम सिविक्स की बात करें तो ऐसी कोई स्पेसिफिक टीचिंग एड्स हैं जिन्हें दिखा के हम सिविक्स पढ़ा सकते हैं? Yeah. बिकॉज ऑल जो हम सिविक्स में पढ़ते हैं दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज. Correct. तो हम किस तरीके से Okay. बच्चों को करें? देखो अभी हमारे पास थोड़े पिक्चर्स है यहाँ पे. बेसिकली इनिशियल स्टेज में जो सिविक्स होता है हमारा, वो होता है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. तो उसके हिसाब से हम सिर्फ ये स्लाइड्स दिखा सकते हैं. देखो तो ये these are just slides I have made which I show the children and then we talk about it differently. So I can just show you now. See now, this is also like people who help us. ये जो स्लाइड्स है, इस स्लाइड्स के द्वारा भी हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि कैसे सिविक्स का ये पार्ट होता है. देखो, Okay. these are just professionals like people who help us. See, this is the basic जो इनिशियल स्टेज में रहता है. So do these kids also recognize them? Yeah. Now see, like simple. What is this picture about? Doctor. Doctor. Now what does a doctor do? He gives you medicine, yes, when you are sick and all. Okay, now let me see. Who's this? Teacher. Who's this? So what is he called? What is he called? Bullock carts and everything, but what is this man called over there? Farmer. A farmer. Okay. Milkman. Now you remember in this milkman I had done a lesson with you on economics.
about milk and milk products. अभी इसी चित्र के द्वारा हम लोग ने किया था ना. Which are the animals who give us milk? Buffalo, Yes, cow, cow, goat, camel. Yeah. So अभी ये जो मिल्क मैन का चित्र दिखा के हमने उसको ये दिखाया था कि दिस मैन इज कैरिंग मिल्क. तभी इन्होंने बोला बम्बई में शहर में तो खाली गाय का दूध मिलता है या भैंस का दूध मिलता है. Then I told them that since I had been to Dubai, I had seen their camel milk and it's a little slight different taste, bitter, and children were really like amazed कि camel milk and people drink it. So that is like how we had developed the language over here. Now see the goldsmith. Who's this? Babar, Yeah, Babar. Now whose picture is this? Tavarmali, Yes, Tavarmali, Sarvapalli what? Rasta Tavarmali, Rasta Little, Radha Krishnan. Now what is very famous about? What is something famous about Dr. Radha Krishnan? What do we do? Do you remember? I'll give you a clue. On 5th September, what do we do about Radha Krishnan? Teacher's Day. We celebrate Teachers' Day in his memory, right? Okay. Now, see. Let's see. Who's that? Mahatma Gandhi. You remember when did Mahatma Gandhi die? When did he die? 30th of, yeah, he died. How did he die? How did Gandhiji die? People kill. Who killed him? Do you remember the name of the man who shot Gandhiji? Nathuram? Nathuram what? Nathuram, yes, correct, but what is the second? He shot Gandhiji. Where, which place? At Delhi over here. You remember? Near Birla House he was shot dead. Now when is Gandhi Jayanti? When is Gandhi Jayanti? When do we celebrate Gandhi Jayanti? Which date? 2nd October. Correct. On 2nd October we celebrate Gandhi Jayanti and we all get a holiday. You remember? See? So these are the now whose picture is this? Wait, don't tell him. Let us see. Yeah, he started the Ganpati festival. Now can you tell me why did Lokmanya Tilak start the Ganpati festival? All people together. All people come together. But why? Why every time people come together? So what? To play. Only to pray? Think what happened many years before. What was there? Elephant. Not only for the god. Think what happened many years before. Who was ruling India? Who was ruling India before, many years before? You remember? Who? The British people. And I told you from that he started the Ganesh festival. Yes. Okay. Now who's this? Nehru. Which festival do you celebrate? Children's Day. Right. Why? Why Children's Day? Children Liked. Yeah. Jawaharlal Nehru liked Nehru. And what was he? He was called as Tata. Chacha. Very good. Who's this? Indira Gandhi. Who's this Indira Gandhi? Yeah, she was Jawaharlal Nehru's daughter. Correct. That's ओके आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार हमारे दर्शकों को बता दूं कि अगर वो हम लता नायक जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी क्वेरीज हो तो वो हमें कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर. नंबर है 1800112008. मैं एक बार फिर दोहरा दूं. टोल फ्री नंबर है 1800112008. इसके अलावा आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 2651104
613 पर, या फिर आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं 265111609 पर। अच्छा, सो कमिंग ऑन टू आवर टॉपिक, मैम इफ यू कम ऑन टू इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में हम एक बेसिक लेवल पे कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? बेसिक शुरुआत आप बैंक से कर सकते हैं कि जब बच्चे छोटे हैं तो उनके थोड़े अकाउंट खोलो, teach them about bank. Now at preschool level they will not know, they will only know that this is a bank और यहाँ पे पैसा रखा जाता है या निकाला जाता है. Start there. उसके बाद में जब बच्चे पहली कक्षा में आते हैं तो उनको ऑपरेट करना भी सिखाओ कि आज हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें विड्रॉ करना है पैसे, वहाँ से स्टार्ट करो. कुछ लेना है, आज हमारी किसी चीज़ की हम जो लाए हैं उसकी प्राइस इतनी है, लेकिन एक महीने में जब प्राइस बढ़ती है तुरंत उसके ऊपर टैप करो कि देखो इसकी प्राइस बढ़ है. सो द चिल्ड्रन देयर नो कि पैसे कैसे बढ़ते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कम पे, कि वही प्राइस पे नहीं रहता है. और दूसरा एक हम लोग ने अभी ऐसा सीखते सीखते एक क्लास में डिस्कशन हुआ था कि 8 बच्चे क्लास में थे, एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई रियली रियलाइज्ड हाउ इट इज द चिल्ड्रन डू अंडरस्टैंड कि कई 8 में से 3 बच्चे झोपड़ी में रहने वाले थे, 2 बच्चे बंगलों में रहने वाले थे और बाकी के फ्लैट में रहने वाले थे. तब उनमें से तुरंत जो छोटा मेरा 2nd स्टैंडर्ड का एक बच्चा था जो झोपड़ी में रहता था, वो बोलता है हमको तो कुछ नहीं पैसा देना पड़ता है, पर मम्मी पापा को जो पैसा मिलता है वो ही कम पड़ रहा है. ओके, सो देयर दे वर लर्निंग दिस, द पॉवर्टी लाइन, अगेन द मिडिल क्लास एंड दिस. वो तो उसी लेसन को पकड़ के हमने किया, नेवर माइंड हमारे पास पैसा कम हो या ज्यादा हो, पर हम उस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करें, हमने तुरंत वो टॉपिक चेंज करके उसके ऊपर आए. और फिर बाद में वो बच्चों को भी सिखाया कि ऐसा नहीं कि मम्मी तुमको पैसा देती है तो उसको जैसा मांगता है उसे वेस्ट करो, कि चॉकलेट खाओ, थोड़ा सा एक बाइट खाओ फेंक दो, या किसी चीज को लो 2 मिनट में उसको तोड़ दो. एंड उसके बाद में हमने देखा कि काफी बच्चों में सुधार आई कि अपने बच्चे सेव करने लगे हैं पैसा भी, यू नो, and then they are the children who have started supporting the other children. So that was a very good example we learned, you know, from this class teaching only. तो वहाँ पे हम लोग वो इकोनॉमिक्स का उसके द्वारा वो पैसे का इसमें किया. अभी उसके ऊपर के क्लास में जब जाते हैं बच्चे, like you can start building up this bank according to the bank, then show them the business, कि इसके पापा बिजनेस करते हैं, how there is rise over there, sometimes the business is going on well, so then उस पापा को बुलाते हैं हम क्लास डिस्कशन में, करो कि आज हमारा इस महीने में बिजनेस अच्छा था, इस महीने में बिजनेस अच्छा नहीं था, क्यों नहीं हुआ. तो इसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिस्कशन, यू नो, थ्रू दीज ऑल एक्टिविटीज ऑफ द क्लास करेंगे तो बहुत अच्छा है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आई थिंक कन्वर्सेशन मेथड, या फिर जो हम बच्चों के साथ अपना रेगुलर इंटरैक्शन रख सकते हैं. You know, you create your own activities for that subject when you are teaching. Don't stick to the textbook कि चलो आज textbook है तो textbook सामने लेको, यार minimize the lesson, condense the lesson, and then go accordingly by reading through the lesson line by line. Don't do that. The children get bored many a times. Okay. यहाँ पे हमारे आगे कुछ गेम्स रखे हैं, तो मैम मैं चाहूँगी कि मैम एक बार हमारे लिए वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं. अभी ये जो गेम है, दिस इज बेस्ड ऑन आवर इंडिया ओनली. सी, अभी इस गेम के द्वारा बच्चों को काफी सीखने को मिलता है. देखो अभी जैसे हमारे डिस्कशन हुआ था एप्पल्स आर ग्रोन विच प्लेस एंड ऑल, वो हमारा यहाँ पे चित्र है. उसी प्रकार हमने क्या किया था, छोटे छोटे कलर्ड पेपर्स लेके एप्पल्स शेप बनाए थे, ग्रेप शेप, एंड देन द चिल्ड्रन हैड टू कीप ऑन द प्लेसेस वेयर थिंग्स आर ग्रोन. वो एक किया था. बाद में हमने एक छोटा एरोप्लेन कटआउट किया और अब बताया कि आज मैं दिल्ली गई थी पर मैं फ्लाइट से गई, तो मेरा एरोप्लेन कहाँ से गया होगा. सो देन द चिल्ड्रन जस्ट मूव राइट प्लेस मुंबई और वहां से वो मूव करते हैं. सो ये एक इतना बड़ा नक्शा बच्चों के साथ लेके खेलना बहुत अच्छा है. नाउ यू विल सी हाउ दीज 2 चिल्ड्रन कैन प्ले विद इट. आई डोंट, विल दे बी एबल टू सी इट? Okay. Now in this map, can you show me the different state that I ask for?
show me Gujarat. Gujarat. Yes. Show me Rajasthan. Okay. What is Rajasthan famous for? What is it famous for? Yeah, the tiles that we saw and roofs. Okay. Maharashtra. Which are the fruits that you get in Maharashtra? Which fruits do we get? Which fruits do we get? You know what are fruits, Mukund? Which fruits? Which fruits do we get in Maharashtra? Which fruits do we get in Maharashtra? Can you play that game? Let's play. Okay. Okay, yeah. Which are the states of yours? Now, pick up Goa. Goa. Cut it out and put it. Yeah, tear it, tear it. Yeah, put it place. Where's the Goa? Where is Goa? Oh. Goa. Yeah, correct. Now, in this map, इसी map से हम लोग उनको direction के बारे में करेंगे अभी, so which is very very important. Now, this is the map of India. Now, we'll talk about directions. Which are the directions? Directions. Which are the major directions? Which are the major directions? Down. North. East. East, correct. So this is the east, this is the west, this is the south, and that is the north. Okay, now listen properly. I want what lies to the west of Maharashtra. What lies to the west of Maharashtra? What is there? What is there? What is to the west of Maharashtra? West of Maharashtra, what is there? See, this is Maharashtra. Which is the west of Maharashtra? West. West. So what is there in the west? Water. So what is that? That is the Arabian Sea. Now in the Arabian Sea, which island is there? Which island are these? Lakshadweep Islands. Now there are islands on the west. There are islands on the east also. Which are those islands? Islands to the east. Which islands I said? Lakshadweep is here. Which is the island there? Andaman and Nicobar. Now see here, I want to tell you, Mukund's speech will not be clear because he has major problems. Okay, I just wanted to bring to it. But through sign language, he is superb and he gets really very very good marks in this exam. And he writes his papers very beautifully with excellent language. But his problem is his speech, because he does not benefit from his hearing aid at all. So we are just giving him the base now. We started off him with sign language. So with sign language, if I use, he will start doing it. Okay. Now this is to the west and that is to the east we saw. Now on this globe. Okay. Okay. Now let's see the globe. I'll keep it here. Now, we saw last time the earth, right? Now this earth moves. It has how many movements? How many movements does the earth have? I want you to answer. How many movements? How many movements does it have? You remember? Rotation and revolution. So how many? How many are there? Yeah, rotation and revolution. How many are there? Two movements. There are two movements, correct? Now on this globe, see, it's going. Watch the globe properly.
Okay. Now what do we see on the globe? What do we see all this? Water. There is more water. Now do you remember how many percentage of water is there? How many percent of water? Yeah, there is 71% of water, right? And what is the other things that you see? What is all this? That is land. Okay. Now do you remember what is the land part called? What is the land part called? What are all these called? The land part called. Name for that. Country. Country? No. Delta. Think what is it called? The land part. You said there is water and there is land. So what is the land part called? What is the name for the land part? Delta. Very good. It is called continent. Yes. Now how many continents are there? 7 continents. You're sure? There are 7 continents. Can you name them? Hmm? Show me. Where is Asia? Slowly. Yeah, that all is Asia. Correct. Then Delta. what is that? Delta. Delta. What is that? Delta. What is that called? Australia. Delta. Australia. Delta. Okay, next. Which is the other continent? South America. Where is South America? Okay, this is, see here, shown here, South America. Then North America. North America. Okay, then Europe. Africa. Where is Africa? Okay, Europe. Europe. Correct. So now these are the 7 continents. Now you said there is a large and 71% water, right? Now what is the large part of water called? Large part of water called? All this water. What is it called? One word I want. Correct. It is known as oceans. How many oceans are there? Ocean. Can you tell them which are the 4 oceans? Indian Ocean. Hmm? Atlantic Ocean. Hmm? Arctic Ocean. And Pacific Ocean. Pacific. Pacific Ocean. Can you show me where is Indian Ocean? Indian Ocean. Yeah. Can you show on the map where is Indian Ocean there? Down. Correct. You remember in this map there is not shown, but which country is over here? Which country? Sri Lanka. Right. Okay. So now we saw the water parts. Now besides oceans and land, the continents, what else is there on this globe you get to learn? Seas. Only 4 seas you know? Now at the second standard level here I want to bring to your notice. Along with this we were doing, and while we were doing this continents and oceans, suddenly the children thought like they could see some seas. Like one was the Arabian Sea to the west of India. So with that they learned 4 more seas which were little bigger. So can you tell which were the 4 seas? Which were the other seas? No, which other sea? Arabian Which is the other sea? Black Sea. Okay. Red Sea. Now this was a very interesting, because you know they thought that it is easy to remember and point on the map because of the Colours. Black Sea, Red Sea, and then suddenly someone saw the Dead Sea. Then they asked, Dead Sea means everybody's died over there? Then I said no, then how the people are able to float. I got lots of pictures about the Dead Sea, and then I showed them, and how the water is reducing, that through newspaper we did. Okay, so ma'am, when you're working with kids like Mukund, जिनकी जो speech है वो इतनी ज़्यादा develop नहीं हुई है, Yes. तो while you're teaching teaching them, क्या आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे efforts डालते हैं जिससे कि you just try कि उनकी speech जो है वो develop हो सके? Yeah, we are doing now. जब इसका individual speech session रहता है मुकुंद का, तभी हम उसको ये syllables देते हैं. See, now the progress with Mukund is very slow because he came very late to our school. That is one thing. Second thing, उसको hearing aid का अभी भी उतना benefit नहीं हो रहा है. अभी उसके parents को कहा था कि उनका cochlear implant के लिए भेजो. But parents were under this thing that how much will he able to hear?
we don't want to take risk. But जैसे अभी मुकुंद आपको देखता है, he's a very intelligent child, but his every time I have to change my strategy and planning every for that. time in every lesson I have to change my strategy, and I have to see that he gets maximum exposure, he gets self experience whereby he is able to do. But then अगर मुकुंद को hearing aid से इतना benefit नहीं हो रहा है, still you keep on using Yes, that. because in these 4 years what I have seen is Mukund has started getting his syllables now. Okay, his syllables are there, and he started of his own. I can hear today he's using his voice, which he was not using Initially. at all. And I'm very confident, like at least 4-5 years, definitely he will get at least something that the parents will also start understanding. And I did meet some of his relatives, and you know, I was very happy that they said, oh, there's a lot of difference in what Mukund was earlier. Earlier Mukund was full of frustration, but now he knows so much, and he helps his other cousins also with its work. Okay, so do you think that home visit also plays an important role? Yes, While very teaching a much, child? very much, very much. Okay. Now see, I would also like to bring one thing to your notice for the teachers. You know, you can make these work cards for children. Suppose you have done with a lesson. See, they are simple. I had done with a lesson on planets, and I just made this worksheets, you know, like a card. Like even if I'm absent the day that you give these children these cards, the children will sit and work it out. Right. And they'll try to find out the answer even if it is not there. And this is not just by reading textbook, only on the basis of the discussion method that we have done in the class, or the children have utilized some conversational skills over there, or they have done it through slides. Okay. So you basically summarize the entire chapter into the small worksheets, You know, like, and they, when we give question answers to the children on the blackboard, or you give them, they feel, again we have to write the same way. It should not be that tick the correct answer, or just write true or false, or fill in the blanks. That should not be the exercises. You know, change your exercises. Sometimes, you know, you give your exercises in the form of, like, say, choose a correct answer, like TOEFL test, you know. A sentence is given. What does that sentence mean? A, B, C, D. You know, they enjoy. At the same time, the children, our deaf children, are reading. Basically, otherwise a deaf child is lazy to read. That will not happen. You know, it gives it a support to the child to read and then answer. So whereby you will know the child has read and answered. And then when you are giving these work, see that your children are not sitting next to each other whereby they copy. Right. That is also fun, you know. Or you know that your 8 children in the class, all 8 children need different things to do. So give a different worksheet. If you have given one child, name the following. Give another child, take the correct answer. Right. Give the third child, in the map place this thing. Something like that. So all your 8 children have different worksheets. Once they finish, transfer it. Give each one. At the end of the week, the teacher sees that my children have got all the worksheets on that particular lesson, and you will realize amazingly the children are thoroughly prepared for that chapter. ओके तो यहाँ पे हमें मैम ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि ऐसा नहीं है कि जो डेफ पीपल हैं वो रीड नहीं कर सकते. दे कैन रीड दो एट टाइम्स दे मे बिकम क्वाइट लेजी इन रीडिंग दिस. और जैसे कि मैम ने अभी बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चों को अगर आपने साथ में बिठाया तो दे माइट कॉपी दे वर्क फ्रॉम ईच अदर. तो एक बहुत ही अच्छा तरीका मैम ने बताया कि अगर ग्रुप एक्टिविटी आप करा रहे हैं और आपने बच्चों को वर्कशीट्स दी हैं उसी में, तो आप हर बच्चे को अलग वर्कशीट दे सकते हैं बट ऑन द सेम टॉपिक. करेक्ट. जैसे कि एक वर्कशीट में आपने ट्रू फॉल्स दे दिया, दूसरी वर्कशीट में आपने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए. तो इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं बच्चों के रिविजन के लिए, दैट कुड आल्सो बी अप्लाइड. और मुझे ये कहना है कि ट्रू और फॉल्स भी अगर देना है हमको, एक चैप्टर पे काफी निकल सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी स्टिक टू इट ओनली. थोड़ा आपने जो अगर विजिट में बारे में उसी में डाल दिया और दूसरा कुछ डाल दिया तो बहुत अच्छा हो जाता है, यू नो. एंड देन लाइक नेम द फॉलोइंग के में करते हो. देखो अभी हमने यहाँ पे इस, आई जस्ट रीड टू यू व्हाट आई हैव रिटन. सी, टू वन चाइल्ड आई हैड गिवन लाइक नेम द 4 बेसिक डायरेक्शंस एंड ड्रॉ फॉर इट. Okay, so he's done there. Okay. Then since I had brought a compass in the class, and the children went out and saw in which direction is our school, or which is the direction the blackboard is pointing to. So I had given them that
who else makes use of this compass? So then I had shown them a small film on a ship sailing, and on that ship the sailor had a compass over there. So then they identified that sailor with that, and so I had given them that question, what do sailors use to find the direction? Then I had given that where does the sun rise, because हम लोग स्कूल के बाहर जाके खड़े रह के ये एक वीक में पूरा लेसन किया था कि which side the sun is rising you see, and that is your east. By the end, in the 4 o'clock जब स्कूल छूटा, just go and find out where is your sun, and they say ma'am it is not there, it has gone to this side. So this is how, you know, in the beginning the children learn the directions also. So now through the sun they tell me it is afternoon because the sun is on our head. So based on that I had given this question, like what helps us in finding the direction. ये मैंने सवाल डाला था क्योंकि उन्होंने sun का study किया था तभी. Okay. And then like can you give me 2 lines descriptive. See descriptive ऐसे जब बच्चा सीखता है उसी के ऊपर मैंने now describe the sun. So like they said the sun rises in the east, it sets in the west. I said that is one sentence for me. What can you give me more about the sun? They said the sun is very difficult to see. It gives you Heat, light they got. Right. Then I said now if I close the entire room, I do not, even the windows, I do not allow the light to in, what will happen? And we did an experiment with science, was to keep a plants away from the sunlight. And they saw one of the creeper just moving out in a direction where there was light. And they could not believe that the plant was not growing straight, but it was going turning. round away. And I changed the direction every time to show them that, and they learnt it. उसी प्रकार मून का उन्होंने काफी स्टडी किया. That was it was very amazing. Like I can just find out if Mukund remembers it. Let us see. Mukund, you remember we did the lesson on the moon. Every day I told you to watch the moon shape. You remember? And then you drew in this thing. You told me one day there was no moon. You remember? Moon was not there. What day is that? Purnima. No moon. No moon is called what? You remember? Purnima is where you see the moon, full moon. You saw the full moon, Purnima. What is when there is no moon? Yes? Yeah, no, what is that? It begins with what? Amavasya. So that was Amavasya, there was no moon. And then sometime the moon was in just, what is that? Thin moon. So you know, they comment, the moon is becoming thin or moon is becoming fat. So that's simple thing. So he's giving us a word that is called the crescent. Okay. So he remembers the geographical terms now. So that was called the crescent. So इसी प्रकार बच्चों को ही involve कीजिए उस subject में. Okay. तो जैसा कि अभी हमने देखा कि मैम ने हमें अब तक कितनी बातों पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, कितने नए टॉपिक्स पे लाइट डाली. सो अगर मैं उसको समराइज थोड़ा सा करूं तो इट वुड बी कि सबसे पहले तो बच्चों को ज़रूरी है हम उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दें, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बच्चों की नॉलेज है वो कभी भी टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रहने देनी चाहिए. बिल्कुल नहीं. सो यहाँ पे मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल एजुकेटर पे ज़्यादा आती है कि प्लानिंग इज मस्ट before you take planning lessons. is one. Second is be very, very informative yourself. You should have more knowledge. Sometimes I'm telling you, be ready to accept if you have insufficient there and the children point out to you also, be ready for it. Accept it. Many a times it happens, children say, Alata, you didn't know, but I just saw it on the TV. Sometimes their knowledge is more than you also. So be informative, because today's children are 10 times faster than us. They've become more of advanced, I think. Yes, and they make, some of them use computers at home, some of them try to find out, some of them discuss with their friends also. So be more informative, have enough knowledge, don't stick to your textbooks. You know, you should use the textbook as a guide for the children only to read. Let the children read it and come out like what it is. Similar, one suggestion I can give, you know, as a good teacher you could also read up all your question answers that are given at the back of your lesson. For your knowledge, read it, so that you know what is emphasis is given on. So that helps in the form of exam also, and at the same time for them to learn also. That's very important. And I think as a teacher you have to put in efforts, whether you have put in 10 years of service or 20 years of service. That is immaterial. But
take out new strategies, and I think the children also love it, and they will be a part of it, you know. So develop that love in the child, that this is a subject, is not only for book knowledge or not only for my exam that I have to study, but I have to study it, that I remember it all my life. तो आई थिंक जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं इट दैट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली दोज 10 टीचिंग स्ट्रैटेजी दैट वी रेड इन दैट. आई थिंक हर स्पेशल एजुकेटर अपनी तरफ से कुछ नए यू नो इनोवेटिव आइडियाज जो है वो यूज कर सकता है एज अ टीचिंग. मोर क्रिएटिविटी शुड बी देयर. और एक भी मुझे एक यहाँ एक बताना है कि समटाइम्स टीचर्स से वी आर नॉट क्रिएटिव, वी डोंट नो ड्राइंग. डोंट वरी, if your school has an overhead projector, put that picture on that overhead projector, enlarge it on the board and trace it. You don't need to be an artist or something. Yeah, you know, हम usually creativity को drawing से connect करते हैं. Exactly. वैसा नहीं होना चाहिए, you know. Don't even hesitate and feel that अरे मुझे drawing नहीं आता है, ये लोग हंसेंगे. Don't feel that. Just take an overhead. वो भी नहीं होगा तो हम कांच और ट्यूबलाइट के साथ रखे. You trace your picture. Okay. But be ready for the lesson, plan it very well, that is the most important. And for that one little lesson also हम उसके ऊपर कितना क्या कर सकते हैं वो देखना ज़रूरी है. Okay. मैम अगर हम आजकल के टाइम्स की बात करें, so technology has you know become something which is very advanced these days. So do you think that new technology like computer or internet plays important role in teaching with deaf people rather than हम सिर्फ text books को ही follow करते हैं? Yes, very good question you have asked me there. See, now after we have done these lessons on history or geography, you know, you tell the children to make a project, and through project tell the children, I want you, since you have learned computers, go at your computer, search for yourself and get the news, information about that particular topic. And amazing, like the 10th standard children have done a beautiful project now. I've given them to do is on the world wars. Okay. How many wars were there? And then one or two children came that there were so many wars, all the wars. I said that is up to you. Which war you want to choose? So some of the children have chosen, you know, like begin with India, Ashoka, the Kalinga war, because they have visited a place, you know, they wanted. Like some of them have chosen the wars between the Maratha and the Hindu Muslim, like that type. I said do whatever you want, but I want good correct information. Then some have chosen the First World War, the Second World War, and they're working at it. Like I think in 15 days time I have given them, they should come up what information they collect. I would like to see that. Okay. तो जैसा कि मैम ने अभी बताया कि जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी आ गई है उससे हमारे जो डेफ बच्चे जो हैं उनको काफ़ी हद तक इस चीज़ का फ़ायदा कराया जा सकता है. जैसा कि मैम ने अभी अपने स्कूल का एक एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने अपने क्लास के बच्चों को प्रोजेक्ट करने के लिए दिया अपॉन वर्ल्ड वॉर्स, और मैम ने कहा कि आप खुद जाइए और नेट पे सर्च करके लाइए अपने वर्ल्ड वॉर्स के बारे में, एंड दे टुक आउट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. तो इट मीन्स कि हम नई टेक्नोलॉजी को बच्चों के साथ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. और दूसरा है ना, यू नो, जस्ट मेकिंग चार्ट. अगर हम बच्चों को बनाने को दो ना तो वो क्या करते, टेक्स्ट बुक खोल के उसी को कॉपी करके और दे देते हैं. तो वैसा नहीं, तो हम अपने पूरे क्लास के साथ एक साथ बैठो और आइडियाज निकालो, पहले डिस्कशन करो और फिर उनको बोलो यस नाउ दिस इज अ चार्ट पेपर, व्हाट आर वी गोइंग टू पुट ऑन दिस, and then you will realize, like at one portion they will say put writing something, some picture should be there. तो through let the children do more. और एक चीज बहुत important है कि teachers should talk less in the class, in the deaf class. I think encourage the children to come out with it more, be it sign language you are using or be it your oral language. That is immaterial, but let the children speak more. And do you think that it really works? Yes, it really does. हर बच्चा equal initiative लेता है क्लास में करने के लिए परफॉर्म? अभी हमारे क्लास में देखो 8 children are there, and all like there are 2 of them who, like a child like Mukund, he cannot understand oral, but through sign he is able to be a part of the class where a few clues are given to him. So everybody can be made a part of it and take part, and they should really love. Social studies is not difficult. I think this has helped my children who were like, I want to give 10th standard exam, but I don't want to do social studies. Right. And those are the children who have got more marks. I said don't mug up. See, that is what I think social studies is something जो कि बच्चे सिर्फ they usually mug up everything. Yeah, that should not be done. And without understanding जो mugging करता है बच्चा हमेशा एग्जाम में जाके भूल जाता है.
See, there are so many simple questions in the paper. वेरी सिंपल क्वेश्चन आर देयर. बच्चों का अगर ये सब ऐसा ये इस तरीके से जो बढ़ावा दिया जाता है बच्चों को, उसके हिसाब से भी अगर मैप वर्क होगा तो भी बच्चों को वहाँ 10 मार्क्स जो मिल जाते हैं आसानी से. अगर आईसीएसई बच्चे तो उनका तो मैप वर्क बड़ा होता है, इसके द्वारा आईसीएसई बच्चों के तो सीख जाते हैं तुरंत मैप. दैट इज वाई लाइक सी यू डोंट स्टिक दैट आई एम टीचिंग एसएससी तो मुझे एसएससी का ही सिलेबस फॉलो, यूं बस उसको पकड़ के नहीं जाना है. गेट लवली बुक्स आर देयर ऑफ आईसीएसई, सीबीएसई. Get more information and give to your children, and that helps a lot. ये मेहनत थोड़ी तो हम टीचर को करनी ही पड़ेगी, and I'm telling you 100% children are the best after that. Okay. मैं एक बार हमारे व्यूअर्स को फिर से याद दिला दूं कि वो चाहें तो हमारे स्टूडियोज़ में कॉल कर सकते हैं, उनके कोई क्वेरीज हो या वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं. नंबर एक बार मैं फिर बता दूं, टोल फ्री नंबर है 1800112008. फ़ोन नंबर है हमारा 26511613 और फैक्स नंबर है हमारा 26511609. ओके, सो इफ़ वी मूव ऑन फर्दर टू आवर टॉपिक मैम, अगर हम नॉर्मल बच्चों की बात करें, वी ऑफन यू नो सी हम बच्चों को क्लास में एक टॉपिक दे देते हैं एंड वी से लाइक इस टॉपिक पे आप डिस्कशन कीजिए एंड अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए. सो कैन वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल एज वेल? Oh yes, एकदम we can do that. Give them a chance. You know, initially select very simple lessons and then go to the difficult ones. Okay. And they can do. I think, see, because the children have done conversation, they have done newspaper news, they have done teachers news, because teachers news is one aspect where teacher gives more information to the children, and that through that the children know a lot. So that is very important, so that if you start with this, like as you say, for the discussion, give the children the topic and now you tell, the children will definitely, So they'll come out with the different ideas. Yes, definitely. Okay. Talking about inclusion, I think inclusion is something which is a term that we use in our day-to-day lives. हम सब लोग inclusion की आजकल बातें कर रहे हैं. So what do you think कि हमें अगर hearing impaired लोगों को inclusive setup में डालना है, तो what are the required services that you will suggest? Yeah, one is most important is they need the resource. A resource room where the children can come back and work on the things that they have not followed in that class particular. Like I'll give you an example of Anil. Anil is in an inclusive setup. Okay, he's in inclusive setup. Yeah, the things that he does not understand, but that school does have a resource room. So in place of Hindi or in place of Marathi, the child is given some worksheets to perform. But in spite of that, sometimes he does feel that he's not getting up to the mark. Then what he does is, on Saturday, when though the children are closed, but still we get Anil to help out on that Saturdays. He comes to me with his books and he says, this is what I have not understood. Then I said, you go back. And there is where you tap his previous knowledge, which is very also important. Because the children have done their visits, the children have done, seen and experienced it, so tap them there. So a resource facility at the school is very important. The children should be given there. Okay. So, are there any special facilities also, ma'am, for deaf people to get adjusted in inclusive setup besides resources? क्या उन्हें मुश्किल आती है अपने co-classmates के साथ compete करने में या साथ में पढ़ाई करने में? Do you think ऐसा कुछ होता है? See, compete करने में deaf बच्चे भी अच्छी तरह से compete कर सकते हैं if the child has good hearing, good family support, good teachers support. They can do very well in the normal setup also. It is not that necessary. Sometimes what happens with even if a child is profoundly deaf, but if he listens up to 2000 hertz and has got some speech, like what you see in Anil, he can do it. But family support is very, very important equally when the child is in a inclusive setup. That is very important. Should be taken. The child's hearing, it's not that if he's a profoundly deaf child he cannot go, not at all. He can go, but if he needs a push and support. Now see, in case of him, he does not get support from his family at all. So as a teacher, when I have put him into that system, it's my duty also to give him a helping hand. And that child is able to do. Now he's gone to the 7th grade. Okay. And he's doing excellently.
So personally, ma'am, what do you suggest? A special setup for deaf people or an inclusive setup for? I think inclusive setup, if they are accepted by the regular school children, I think he is also accepted very well. And there are, but see, when you put a load of the handicapped children into the regular schools, it becomes a burden on that teacher. So I think it should be a balanced setup. We talk of inclusive, yes, it's fine, well and done and said, but I think once inclusive setup, you must go and see what the children are really benefiting or no. If not, I think the child should be given a support again. It's not that That you leave up to the normal inclusive school setup and teacher or that's a regular school teacher to do. I would not say normal, again, even we are normal, my children are also normal over here. Okay. But it's only that the hearing is a problem. So these children also can be put up into inclusive, but care should be taken till the end, not just push them and then forget. No, that is not inclusive education then. ओके इससे पहले कि हम श्रीमती लता नायक से आगे बात करें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. विल बी बैक इन अ शॉर्ट वाइल. आप कहीं जाइएगा मत, ये सेशन अभी जारी रहेगा. सो विल कैच यू इन 2 minutes.